Let us see the next question. A proposal to invest in a project which has a useful life of 5 years and no salvage value at the end of the useful life is under consideration of a firm. It is anticipated that the project will generate steady cash inflow of rupees 70,000 per annum. After analyzing other facts of the project, following information were revealed. IRR is 13%. Desirability factor, or we can say that profitability index, is 1.07762. You are required to find cost of the project, that is investment, discounting rate, that is cost of capital, payback period, and net present value. Present value factor at the different rates are given as under. So the discounting rates have been provided to us. So 10% to 13% factors have been given. Use only above present value factors to solve the question. That is a question. I request all of you to go through the question, please. Let us have understanding that say question का आंसर कैसे किया जाएगा. सबसे पहले हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है वो हम लोग समझते हैं. क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन ऐसा दे रखा है दैट लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years एंड ड्यूरिंग दिस 5 years हमारा जो कैश फ्लोस है वो सेम ही है, दैट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 70,000. फिर हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है दैट IRR इज 13%, profitability index or desirability factor or benefit cost ratio 1.07762, and there are a few questions provided to us. सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है that say cost of the project क्या होगा. That is the first question. Now friends, over here say looking to the information of the question, cost of the project का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ. Everybody is requested to pay attention. देखो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है वो ऐसा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो अपॉन इन्वेस्टमेंट. एंड देखो ये जो फॉर्मूला है उसमें इन्वेस्टमेंट है और जो हमको आंसर कैलकुलेट करना है एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको वही कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अच्छा, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि इन्वेस्टमेंट को मैंने यहां पे रख दिया इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो 70,000 इनटू PVIFA. क्यों? क्योंकि हर साल का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर साल का कैश फ्लो सेम है एट K कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर n नंबर ऑफ इयर्स, जो कि 5 साल है हमारे एग्जांपल में. वो इंफॉर्मेशन है इसलिए मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय PI का वैल्यू भी है अपने पास 1.07762. ऐसा मैं समझता हूं. Now you can see that say the question is providing the information of the IRR. However, the question does not provide the discounting rate information. Rather आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है कि डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा वो आपको कंप्यूट करना है. So going with this formula will not be possible to make the computation of the investment. क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आते हैं then in that case हम लोग दोनों का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं. x plus 3 is equal to 10 तो x का आंसर हो सकता है, पर x plus y is equal to 10 तो x and y दोनों का आंसर नहीं हो सकता है. Proceeding further. ओके, तो दूसरा एक इंफॉर्मेशन जो बचा है हमारे पास वो है IRR का. We know that IRR is a discounting rate at which NPV is 0. So NPV is present value of cash inflow minus investment. IRR is a discounting rate at which NPV is 0 is equal to present value of the cash inflow, that is 70,000 rupees का annual cash flow into PVIFA at the rate IRR for 5 years minus investment. इन्वेस्टमेंट को मैं शिफ्ट करता हूं वो पॉजिटिव हो जाएगा और मेरे को वही आंसर चाहिए एक्चुअली. इज इक्वल टू 70,000 इंटू PVIFA एट द रेट IRR
जो कि हमारे एग्जाम्पल में 13% फॉर 5 years। हमको 13% का 5 years का फैक्टर क्वेश्चन में रेडीमेड दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो अपने को कैलकुलेट करने का आता है। तो वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर 13% 5 years का फैक्टर समेशन है 3.517। So we understand that say this is 3.517 into 70,000 ऐसा करके मेरे पास इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। And with that say we can do the first question answer. So as a student you need to understand it carefully that इसका भी नाम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है और इसका भी नाम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो है। नाम तो दोनों का सेम ही है पर कैलकुलेशन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पीआई का वर्किंग है और दूसरा आईआरआर का वर्किंग है। वी अंडरस्टैंड दैट, मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, वी अंडरस्टैंड दैट से अगर हम लोग एनपीवी का फॉर्मूला लगाते हैं ना फ्रेंड्स, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो माइनस इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है। पर उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो कौन सा होता है? एग्जैक्टली यही होता है। ये यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो लिया जाता है, नहीं कि ये, नॉट दिस वन। क्यों? क्योंकि ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो वो क्या बताता है? कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट आईआरआर। और एनपीवी के लिए क्या चाहिए? कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। So let us start making the calculation of the investment, say using the IRR. चलो write down answer for the first question. उस पे लिखो calculation of cost of project / investment. उस पे लिखो over here we will use IRR information, comma to compute investment, full stop. We cannot use DF, desirability factor / PI information because we do not have cost of capital data to compute present value of cash inflow using cost of capital. Full stop. Now write down new heading, calculation of investment। और एग्जाम में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। ईयर 1 to ईयर 5 कैश फ्लो 70,000। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कैश फ्लो सीरीज को डिस्काउंट किया जाएगा। आईआरआर कितना है? 13%। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? PVIFA at 13% for 5 years, that is 3.517 present value, 2,46,190।
2,46,190 less investment is NPV. NPV है 0, so investment क्या हो जाएगा 2,46,190 बैलेंसिंग फिगर, ऐसा हम लोग समझते हैं। This is the way we can compute the investment. I want you to do remaining all the 3 questions on your own, फिर मैं आपको करके देता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है that what is the cost of capital discounting rate, that is a question। तो उसका आंसर कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में फ्रेंड्स उसका कैलकुलेशन करने के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द पीआई इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो प्लीज राइट डाउन आंसर अलोंग विथ मी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ब्रैकेट में लिखो कैश फ्लोज डिस्काउंटेड at the rate company's cost of capital। So PI is present value of the cash inflow upon investment। So present value of the cash inflow is PI or desirability factor into investment। Importantly friends, investment तो investment ये year 0 में कोई भी फॉर्मूला में इस्तेमाल हो वो अलग नहीं होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना है 246,190, 1.07762 into 246,190, so 2,65,299.26 आ रहा है, तो मैं 300 कर देता हूं। अच्छा, ना इसके बाद हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें क्या किया जाएगा ईयर 1 टू ईयर 5 कैश फ्लोज लिखेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे। ये 70,000 है, ये 265,300 है। हम लोग लॉजिकली ऐसा समझते हैं, एकदम गौर से सुनो। 70,000 into PVIFA at company's cost of capital for 5 years, that is number of years, is 265,300। So PVIFA at K cost of capital for 5 years is equal to 265,300 upon 70,000। So 265,300 upon 70,000, so 3.79। यानी यहाँ पे हम लोग एन्युटी फैक्टर को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं 3.79। कैसे 265,300 डिवाइडेड बाय 70,000, ऐसा करके। This is found as balancing figure, so we make a box over here। Now कौन से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का 5 साल का एन्युटी फैक्टर 3.79 है वो देखते हैं। तो देखो ये है एन्युटी फैक्टर 3.79, 3.696, 3.605 and 3.517। Now of course you can understand very well कि 10% का जो एन्युटी फैक्टर है वो 3 रुपीज 79 पैसे आता है। So the discounting rate is 10%। You may have a question कि सर अगर ये टेबल नहीं दे रखा होता तो कैसे करने का? सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड, जैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इन केस ऑफ द आईआरआर एग्जैक्टली वैसे ही करने का। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जिसका एन्युटी फैक्टर 3.79 से कम है, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसका एन्युटी फैक्टर 3.79 से ज्यादा है, उन दोनों को क्या करेंगे इंटरपोलेट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लाइक द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेशन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा दैट से पेबैक पीरियड का कैलकुलेशन कीजिए। लेट अस सी दैट से हाउ टू डू द पेबैक पीरियड कैलकुलेशन।
वर्ड यहाँ पे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यूज नहीं किया है, सिंपल पेबैक पीरियड हमको कैलकुलेट करना है। कैसे किया जाएगा, लेट अस सी। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। फर्स्ट ईयर का 70,000, सो क्यूमुलेटिव है 70,000। सेकेंड ईयर का अगेन 70,000, सो क्यूमुलेटिव 1,40,000। थर्ड ईयर का 70,000, सो क्यूमुलेटिव 2,10,000। फोर्थ ईयर का 70,000, सो क्यूमुलेटिव 2,80,000। फिफ्थ ईयर का 70,000, सो क्यूमुलेटिव 3.5 लाख। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,46,190 है। सो हमारा 2,46,190 कब तक रिकवर हो गया? वी अंडरस्टैंड इट इज रिकवर्ड आफ्टर 3 years एंड बिफोर 4th year एंड। 3 साल के बाद और 4th year के पहले हमारा पैसा रिकवर हो जाता है। सो इट इज गेटिंग रिकवर्ड ओवर हियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा हम लोग समझते हैं। अच्छा, so now how we can make the computation of the answer? We understand that it is payback period is equal to 3 years plus 246,190 minus 2,10,000 divided by 70,000. So it is 3 years plus 246,190 minus 2,10,000 यानी 36,190 divided by 70,000, so 0.517. So that is indicating the fraction of the 4th year की जिसमें बाकी का पैसा रिकवर हो गया। उसको मंथ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.517 years. This is what we understand. Now यही का यही कैलकुलेशन हम लोग और एक मेथड से भी कर सकते हैं। कौन सा, वो मैं आपको समझाता हूँ। ये मेथड है ना सिर्फ ये क्वेश्चन में पॉसिबल है, हर एक बार पॉसिबल नहीं होगा। क्यों ऐसा सर? भाई उसका रीजन ऐसा है कि हर बार एनुअल कैश फ्लो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हर बार हर साल का एनुअल कैश फ्लो सेम है तो ही ये मेथड पॉसिबल। कैसे करने का? इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो। इन्वेस्टमेंट कितना है? 246,190 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो कितना है? 70,000। With that, so you get the answer 3.517 years. This is the way so we can get the answer. Next question पूछा कि calculate the NPV. Let us understand, let's say, how to make the calculation of NPV. So answer of the fourth question. NPV is present value of the cash inflow minus investment. Present value of the cash inflow है 265,300, ये वाला वैल्यू 2,65,300। इन्वेस्टमेंट कितना है? 246,190। So NPV is rupees 19,110. This is the way so we make the calculation of answer. तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि हमको 4 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसका आंसर है 246,190। दूसरा क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट इज 10%। तीसरा क्वेश्चन है पेबैक पीरियड,
3.517 years. चौथा क्वेश्चन है एनपीवी ₹19,110. ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर. ओके, एक छोटा सा नोट लिख लीजिए जो मुझे आपको लिखवाना है. इंपॉर्टेंटली remember that in PI and NPV calculation, comma, we use cash flows discounted at the rate company's cost of capital and for IRR calculation, cash flows are discounted at the rate IRR. Full stop. This is an important working for you from examination point of view. So finally, a small summary. In the step number, that is first question, investment is calculated using IRR. That is cash flows discounted with the IRR, and that itself is the investment. In second question, when we have to compute the discounting rate, first of all we compute the present value of the cash inflow, that is using the PI. This present value of the cash inflow is indicating that future cash flows are discounted using the company's cost of capital, that is 265,300. Cash flows and present value cash flow, taking both of them into account, the annuity factor is calculated ₹3.79, and that is the cost of capital of the company, 10%. Payback period is very simple and normal, no like the great discussion to be made in that. NPV is the present value of the cash inflow minus investment. Whatever the present value of the cash inflow that we have computed using the PI value, say supposed to be used over here, and of course we understand that say as PI is exceeding 1, so the NPV is bound to be positive. And this is the last note that I have dictated to you.